This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes once again. We have already discussed the letter. It is very simple and very easy, so we will not waste too much of our time. But this is a very small letter, to be honest, very small letter. So we will write it this way. This letter is being written. Regarding Mr. X, जो भी ये बंदा है. Now always remember each letter is different. As I am telling you again and again, each letter is very different. So I'm writing this letter regarding Mr. X, who was diagnosed with Alzheimer's disease. Alzheimer's. Please spelling dekh lena. I don't know much about spelling, but still I'm trying my best. Alzheimer's disease, and also had CVA 4 years ago. तो ये दो चीजें उसके साथ हुई थी. ठीक है, उल्टा कर देते हैं ताकि हम पहले लिख दें who had CVA 4 years ago. I will write it this way because I want to connect this line. Who had CVA 4 years ago, and then I will write and was diagnosed with Alzheimer's disease, जिसके symptoms या whose symptoms, the symptoms of which began 3-4 years ago. So these are the two things, these have been mentioned. Now a main problem, that is where I want to tell you what OET is. Please do not make specific consideration. I know we are teaching you, I know teachers are telling you, you are right, that when we tell you a pattern, condition is becoming better, condition is becoming, otherwise we can say, see now, simple, then write this way only, the way we have taught you. Teachers are also telling you the same thing, but आप इसके बारे में सोचो, इसको समझो, and do realize now her condition is getting worse. Sorry, Mrs. X, Mrs. Y कर देते हैं because she is a lady. Now her condition is getting worse, that is the problem, and her husband is unable to cope up, और उसका husband cope up नहीं कर पा रहा है. So it is requested. तो अब requirement क्या है? Social worker best community services करे to help Mr. Brown care for his wife, और हमें community care manager को letter लिखना है. So it is requested to you. तो बेसिकली ऐसा भी नहीं कहा हस्बैंड ने कहा है, बट लेकिन ये कहा है इट इज रिक्वेस्टेड टू यू या इट इज एडवाइज्ड टू यू. एडवाइज्ड वर्ड वुड बी आल्सो गुड अगर आप रिक्वेस्ट नहीं लिखना चाहते. सो इट इज एस वाला पैसिव वॉइस. सो या इट इज की जगह अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, सो यू आर एडवाइज्ड टू, ये आपके लिए इजी रहेगा. सो यू आर एडवाइज्ड टू help them to get their assessment done on urgent basis. So I use all my word in my language. So first thing I want to say, so you are advised to help them to get their assessment done on urgent basis by a social worker. I wanted to use this thing. अगर आप social worker को use नहीं करना चाहते तो बिल्कुल simple हो जाता है. So you are advised to do an urgent assessment, तो सिंपल हो जाता. लेकिन यहाँ पे हमें कहा है कि आप सोशल वर्कर को भेजो, तो ऐसी जगह पे गेट वर्ड लगता है. सो यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प देम और यू आर एडवाइज्ड टू गेट देयर असेसमेंट डन ऑन अर्जेंट basis by a social worker to determine the best community services so as to help Mr. Brown in taking care of his wife. अब आता है हमने क्या क्या मुश्किल लिखा है. मान लो पेपर में हम सेम लिखते हैं एंड हमारी इंग्लिश ओके ओके है. सो दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड. जहाँ पे आपकी इंग्लिश ओके होती है
तो वहां पे पहले दिस लेटर इज बीइंग रिटन हु हैड सीवीए 4 years ago, ये बात सही है, एक्सीडेंट है तो 4 years ago एंड वाज डायग्नोज्ड विद अल्जाइमर्स डिजीज। इस बात को अगर देखो, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ओईटी इज वेरी सिंपल। अगर आपको जरा सी भी दिक्कत आ रही है तो ये लो, बिल्कुल सिंपल ना वर्क। और देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, और कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें लगता है फर्क पड़ेगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सीवीए एंड वाज डायग्नोज्ड विद अल्जाइमर्स डिजीज। Now her condition is getting worse and her husband is unable to cope up with the situation. बिल्कुल simple language. So you are advised to, बिल्कुल simple, आप सोचो क्या लिख सकते हो, to basically send, भेज दो, to send a social worker जो कर सके, who can assess the couple, जो उस कपल को यानी जोड़ी को, आप कपल की जगह हस्बैंड एंड वाइफ भी लिख सकते हो, who can assess the husband and wife and can, और जो ये भी कर सके। नाउ दिस इज अवर नेटिव लैंग्वेज। अब देखना कितना इजी लगेगा पढ़ने में। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग हु हैड सीवीए 4 years ago and was diagnosed with Alzheimer's disease. Now her condition is getting worse and her husband is unable to cope up with the situation. So you are advised to send a social worker. बस ये लिखना था, भेज दो। ये वर्ड नहीं समझ आ रहा था हमें जब हम अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे थे, बस इस वर्ड के कारण हम परेशान हो रहे थे। So you are advised to send a social worker जो who can assess the couple and can determine the best community services. Community की spelling ठीक कर लेते हैं। Who can determine the best community services and can determine the best community services for husband and wife. Simple. And her husband. So you are advised to send a social worker who can assess the couple and can determine the best community services for his wife. So this completes it all. It has everything, every element that we wanted to have. So today we have a very simple letter. It's a very small letter. So the audience must not be having the letter, the people who are following us on YouTube. So this letter is very simple. I'm just gonna omit this thing. So as you can see, Mr. Jane Brown, Mrs. Jane Brown is the lady. So she's having the problems and she has Alzheimer's disease symptoms 3 से 4 साल पहले शुरू हुए थे. So that is why I have written this way, and I can't really undo. Okay, so then memory loss became severe. So first of all, you will write about the social history. Mrs. Brown is married and lives with her husband. Husband is struggling to cope up with the present situation. इस लाइन को भी नहीं लिख सकते because हमें बताना पड़ेगा कि उसको हुआ क्या. So ये वाली लाइनें बाद में आएंगी. So बस आप लिखोगे lived with her husband. Besides, she is a known case of Alzheimer's disease and has been ongoing since last 3-4 years. Also, she had CVA 4 years ago. Now her husband is unable to cope up and is often tearful and frustrated about her condition. दोनों को मिक्स करना पड़ेगा. As now her memory loss is becoming severe, she is unable to remember the basic information. Also, her general condition is deteriorating and she is becoming verbally aggressive. Continence of urine, wakes up during night. सब कुछ प्रेजेंट में भी लिख सकते हो. एंड देन उसके हस्बैंड के बारे में फिर ये वाली लाइन बाद में भी लिख सकते हो. Therefore her husband is struggling. Next paragraph, therefore her husband is struggling to cope up. So basically अगर हम बेस्ट लिखने की सोचे, if we want to write the best, तो सिर्फ हम एक लाइन उठा सकते हैं यहाँ से, या ऐसे सीक्वेंस में चला सकते हैं कि she was diagnosed with Alzheimer's and CVA. Now her memory loss is becoming severe. सब कुछ नाउ में लिख सकते हो. She is unable to remember. पास्ट में भी लिख सकते हो, प्रेजेंट में भी लिख सकते हो. नाउ में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, दैट ये सब कुछ हो रहा है और उसका हस्बैंड कोप अप नहीं कर पा रहा है और उसकी सेफ्टी के बारे में चिंता है और उसके आसपास कोई फैमिली नहीं है, इसलिए हम आपके पास भेज रहे हैं ताकि आप एक सोशल वर्कर को भेज दो, सो दैट यू कैन सेंड अ सोशल वर्कर टू डिटरमिन, बट बाकी सब कुछ सेम, टू डिटरमिन द बेस्ट कम्युनिटी सर्विसेज टू हेल्प मिस्टर ब्राउन इन टेकिंग केयर ऑफ हिज वाइफ एट होम और अदर अल्टरनेटिव. कि या तो वो घर पे ध्यान रख सके, नहीं तो आप उसको कोई कम्युनिटी सेंटर बता दो
वहां पे आके वो अपनी वाइफ का ध्यान रख सकेगा. सो आई एम गोना अनम्यूट यू ऑल, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग बहुत छोटी है. तो जो हम डाउट सेशन रिकॉर्डिंग के बाद करते हैं, आज हम रिकॉर्डिंग के साथ कर लेंगे. सो आई एम जस्ट गोना आस्क यू एवरीबडी कि इसमें लेटर में क्या क्या दिक्कतें आई, और आई होप ज्यादा ना हो. तो लेट्स सी कैसा रहता है. प्लीज आप अपने डाउट जो नॉर्मली पूछते हो वो अब आप रिकॉर्डिंग के साथ पूछ सकते हो, अगर आपको इस लेटर में कोई डाउट आया तो. बस एक ही इंपॉर्टेंट लाइक थी, शी इज डिफिकल्ट टू बी असेस्ड. Pushpam, James ma'am says, sir, should we write during hospitalization or during our care, as it is residential nursing services? Let me read what exactly it is. Ma'am, it is Royal District Nursing Services. So you are a nurse for the Royal District, ma'am. We cannot say कि she is a patient of our nursing home. So we should write it. You have given me two options. What was that? So you have given me two options. During hospitalization, during our care would be better, ma'am. During our care, not hospitalization. During our care would be a better sentence. During our care, her condition is big. Otherwise, ma'am, in this particular letter, as I have mentioned, you don't have to write during hospitalization or during our care. I have just said, if you will remember my conversation or will listen to the recording, you will say, now her memory loss is becoming severe. So I'm not taking, neither I am saying during our care, neither I am saying during hospitalization. I am just saying now her memory loss is becoming severe. So I minimize the risk. My job is to minimize the risk I can. So please do not take any chance. Otherwise it is not wrong if you say during our care. But I am saying you can be even safer. तभी तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ. You will never get OET writing checked. Later on हमें समझ भी नहीं आएगा हमने क्या गलत किया क्या ठीक किया. So इसलिए हमेशा better है. So always say now her memory loss. हमेशा सबसे easy word को ढूंढो. अब उसका memory loss severe हो रहा है, उसको ये दिक्कत आ रही है, इसलिए उसका हस्बैंड कोप अप नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ज्यादा वरीड है. देयरफॉर हम आपको लेटर लिख रहे हैं कि भाई आप एक सोशल वर्कर को भेज के उसके लिए बेस्ट कम्युनिटी सर्विसेज का अरेंज करवा दो. सो दैट विल मेक द परफेक्ट थिंग. आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट पुष्पा मैम. So I would say better not during our care, not during our during hospitalization. So better say now. Any other question, please? Any other question by anyone? I hope I have unmuted you all. No questions at all. So Aman ma'am says her family members live far from her. This is very important. You can write this line because the data is already very less. हमारे पास डाटा इस लेटर में बहुत कम है, तो आप इस लाइन को लिख सकते हो कि उसका हस्बैंड कॉप अप नहीं कर पा रहा एंड ऑल्सो हर फैमिली इज लिविंग फार, सो शी हैज नो वन टू हेल्प. तो आप ही कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करो. अगर उसकी फैमिली होती तो वो हेल्प कर सकती थी, पर फैमिली भी नहीं है, इसलिए आपको करनी पड़ेगी. इसलिए अमन मैम दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिडर्ड. Any other question, please? Chaliye, I hope this letter is easy. That's why we are having less doubts. But if you have any problem, you can still ask. So, Pushpa ma'am, please, sir, we are writing to the community services and again asking them for another community services. Ma'am, we are saying community services. We are determining what kind of services would be required. So we are writing the letter to the community services manager. Let me show you. So we are writing the letter to the community care manager. She is gonna send a social worker who will determine the best community services. So it is not about choosing the community center. It is social worker will go and will assess the situation and will determine the best community services. So that means what kind of services are required. That is what is gonna be checked. Is it okay, Pushpa ma'am? Sir, complete letter will go in the present except she was diagnosed with disease. Yes, almost yes, Poonam ma'am. आज कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? जनरली वैसे तो बात करते हैं, रिकॉर्डिंग के कारण बात नहीं कर रहे हैं या वैसे ही बात नहीं कर रहे हैं, या आज मंडे है सोच रहे हैं एनर्जी सेव कर लें? मुझे बताओ कौन कौन है यहाँ पे.
कोई भी नहीं है? Yes, sir. Thank you for answering. कुछ लोग हैं, खोते कुछ लोग हैं, बाकी अच्छा रुपिंदर मैम ने हैंड रेज कर दिया, ओके दैट्स फाइन। हम हैं, थैंक यू। नीलम मैम ने बता दिया है हैंड Yes, sir. रेज। I'm also here. Harman ma'am is also here. So everybody has understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. Thank you so much. So we are jumping on to the reading session. I am going to hold the recording. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our number is +917696734256.